So hey guys, this is Krishna Solanki this side, and today we are going to talk about product cost sheet. So first of all, what are you gonna learn in this video? You're gonna learn in this video all of the things related to product cost sheet and live an example related to it, and breakdown of each and every single thing of product cost sheet. To save your time as well as my time, I will cut down some of the part of the video so that the time can be saved from both sides. So here I have written the definition of product cost sheet. So what is the product cost sheet? It is my made definition. It is not a standard definition. Product cost sheet nothing but a detailed document that outline all the costs associated with the product. So what it is? It is a detailed document, right? It has all the cost included in it. Whatever the cost is incurred for manufacturing of the product is included in that sheet. Okay, so before starting the video, I want to introduce you to two of the most important thing which cost sheet require. The first thing is direct cost, and the second thing is indirect cost. Okay, so what is direct cost and what is indirect cost? Okay, so guys, the direct cost that is directly attached to the manufacturing of the product, attached to the manufacturing of the product. I would suggest you to increase the speed of video to 1.5x so that you'll manage the things. So what is indirect cost? Indirect cost is nothing but not connected with the manufacturing of the product, but indirectly helps in the production of the product. Okay, so that is the other thing. Okay, so let's just take an example, like this watch. If you want to make this kind of watch, so what you have to do, you have to get some raw material for that thing, like this rubber, like plastic for that thing, and that steel. Okay, uh, okay, so that for the raw material. What more things you will need? Okay, to assemble this thing you will need labors. Okay, so that they can attach all these things. Okay, what more you will need? You will need a factory. You will need electricity to make. You will need electricity to run the factory, run the machinery. Okay, so the parts and the rent you have to pay. Okay, so keep the watch in the mind, and we'll start with the raw material. First we'll need this rubber bands and all the things. What you will need first? Raw material. That means opening stock of raw material plus purchase of raw material minus closing stock of raw material. Closing stock of raw material. But one more thing you can add here. You can add here expenses on purchase minus closing stock of raw material minus sale of waste. So that will make raw material consumed. It's not like we are end here. I'm gonna make you understand the thing. So even if the video will be big, but I'll make you understand this thing. So what happens if you want to buy a watch? Okay, so what you will first need, you will need this rubber. How will you get this rubber? You will get it from the tree. Okay, the tree which produces latex. I hope you understand the word latex. So the produces latex, and it is transported from the tree to factory. So what you will have, you will store these things, right? Raw material you will store. So whatever the opening stock of raw material you will have, you will include in cost or cost sheet. More you will purchase. Okay, so
expenses on purchase. What is this? If you transport it, you will have transportation cost. Let's say freight in cost you will have incurred, and closing stock of raw material will be removed. Okay, so why this is being removed, I'll explain this thing by an example. Okay, so this is a container, this is a warehouse. So you had this much of opening stock. Okay, you purchased this much. So how much you have right now? This much you have. Then later you had, at the end you had this much only. So what happened to this much? It is being consumed. So that's the formula of raw material consumption. So that much you have consumed. Okay, and what is this sale of waste? Waste is nothing but it is not scrap, it is waste. It is not scrap. What is waste for you? If you purchase the raw material, you must have bought it in on container or somewhere, because to transport it you need all these things. So after consumption you must have resold all these things to anyone. For us it is waste, but for someone it is a kind it could be a raw material for them, or it could be useful for them, but for us it is waste. Okay, so we have completed till this. Okay, so till now we have bought the raw material. For conversion of liquid to this rubber, we need labor who can directly work on this thing. Okay, so we will need direct labor. We, the cost of whatever cost will be included in the cost sheet of a production of product. Okay, so what more will we will need? Direct expenses which are directly included for the product. So what kind of direct expenses we could include here? Expenses that are directly related to production. So some specific kind of technique or a machinery, I could say, that is needed for the specifically for the production of a production of watch. Okay, so till now we have done, all the three component is called prime cost. An interviewer can ask to you what is the component of prime cost. So you will include the first, material, labor and expenses. You have to explain this in an interview. Opening stock, purchase, you have to say this. That will make him satisfied. Okay, so till now we have completed all the direct cost. Now we will include indirect cost. So all the factory overhead, it is implied that it includes indirect material, indirect labor plus indirect overhead. So if I have to explain indirect material, it could be additives. Additives means to make this thing, you have to not only need latex, but you also will need some acid or some chemicals that will also be required. I am making it naming it as additives. What is indirect labor? Indirect labor could be your supervisor or your guard of factory. And as for indirect overhead, it could be anything that is required for the production, indirectly for the production of a product, that is the rubber band. Like rent हो गया, packing cost हो गया, your secondary packing cost. Packing are also the two types, primary and secondary. Okay, and later it will make, after that we have to include opening WIP and reduce closing WIP. Why we are doing this? Whatever the WIP we have completed till now, it will be included, and whatever the WIP is still incomplete, it will be excluded.
So what it will make, it will add the completed WIP. So the whatever the WIP it was in beginning will not be at the end of the period. So we will reduce the WIP which is not in the term of WIP. I hope you have understood this. मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ, जो ओपनिंग WIP था वो पीरियड के एंड तक क्लोजिंग WIP से कन्वर्ट होके फिनिश गुड्स बन गया होगा, तो वो अब क्लोजिंग WIP नहीं रहा. ओके, सो हमने क्लोजिंग WIP को माइनस कर दिया और ओपनिंग WIP को ऐड कर दिया. इसका मतलब आज की डेट में जो कंप्लीट नहीं है प्रोडक्ट, ठीक है, आज की डेट में जो प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं है दैट इज़ क्लोजिंग WIP. अभी हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं, जो कि आगे जाके वापस ऐड बैक होएगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा अब फिनिश गुड्स. ओके, सो हम एक कॉस्ट शीट बना रहे हैं जिसमें हम वो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं जो फिनिश्ड है. सो हम WIP को रिड्यूस कर रहे हैं. टिल नाउ व्हाट वी हैव फैक्ट्री कॉस्ट. So how it is made? Prime cost plus these things. Okay, so make the things more understandable, I will continue in Hindi only. So हम अब तक फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच चुके हैं. So आगे जाते हैं. We will add something more is office and admin overhead. अब हम ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड को क्यों ऐड कर रहे हैं? ओके, आप इस बारे में सोच रहे होंगे. तो हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, हालांकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बिना हमारा डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकता. डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट पॉसिबल. और अगर डिसीजन मेकिंग ही नहीं होएगा तो प्रोडक्ट भी प्रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि फैक्ट्री को जो ऑर्डर्स जाता है कि ये बनाना है, वो बनाना है, जो इन्वॉइस रेडी होते हैं वगैरह सब होते हैं, जो इनडायरेक्टली एसोसिएट विद द प्रोडक्ट है, तो हम इसको ऑफिस एंड एडमिन को ऐड करते हैं. सो यहाँ हालांकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा यहाँ तक हो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ लिखते हैं ताकि हम ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड को भी ऐड कर सके. अब तक हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुँच चुके हैं, ठीक है. अब हम आगे जाते हैं. अब हम ऐड करते हैं फिनिश गुड्स को. हम ऐड कर चुके थे WIP को, अब हम ऐड कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. अब हम इसे ऐड क्यों कर रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को लेस क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक हमने देखा था कि अगर कोई WIP पड़ा हुआ है तो उसको अगर कंप्लीट करके हम उसको बेच सकते हैं, तो वो एक प्रोडक्ट का पार्ट हो गया. अगर कोई फिनिश गुड्स, ओके, तो अगर हम फिनिश गुड्स की बात करें तो फिनिश गुड्स को हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि अगर कोई पुराना माल पड़ा हुआ है, पुराना माल या पुराना स्टॉक जो कि पड़ा हुआ है इन्वेंट्री के अंदर, तो हम उसको भी एक तरह से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कि ओपनिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस हमारा प्रोडक्शन हमने ऐड किया. प्रोडक्शन, ये दोनों माल तो बिक सकते हैं, जो कि बिकेंगे, ओके, सेल्स होंगे, बट हमारा जो फिनिश गुड्स में इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है वो भी तो बिका होगा. अब हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो स्टार्टिंग में जितना था, ओके, उसमें से हमने मान लीजिए इतना बेच दिया, तो क्लोजिंग इतना रहा होगा, तो ये टोटल में से हम इतना माइनस करेंगे तो इतना बचेगा, तो ये हमारा सेल्स हो गया. तो इसलिए हम इसको ऐड करते हैं. तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास आ चुका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो इसमें हमने फिनिश गुड्स को ऐड किया, प्रोडक्शन को ऐड किया, प्लस हमारा पास जो ओपनिंग था वो ऐड हो गया. तो अब तक हमारे पास आ चुका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, अब जब हम कॉस्ट हम पूरा कर चुके हैं तो हमको जाना है सेल्स तक, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो भी रहेगा उसका. तो सेल्स और प्राइस कॉस्ट दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, बैलेंसिंग फिगर, दैट विल बी योर प्रॉफिट और लॉस. सो अगर हम एक तरह से देखे जाए तो इसको हम रिवर्स में भी लेके जा सकते हैं. कॉस्ट के अंदर हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं विच विल मेक योर सेलिंग प्राइस, कि आपका प्रोडक्ट कितने में बिकना चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट मेक्स
a product's whole cost sheet. That's the all I think I could teach you. इसके अलावा एक और चीज़ है जो मुझे बतानी है. वन मोर थिंग इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉस्ट शीट. हालांकि मैं ये स्टार्टिंग में बता सकता था, बट ये टाइम ज़्यादा सही लग रहा है इस चीज़ के लिए. सो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? हम एक प्रोडक्ट की प्राइस निकाल रहे हैं. आपको क्या लगता है कि हम इसको कॉम्पिटिटर्स के साथ क्रॉस चेक कर पाएंगे और पता कर पाएंगे कि ये बेस्ट प्राइस हमारे लिए बन रहा है कि नहीं है? हम कॉस्ट, इसके बेसिस पे हम डिसीजन ले पाएंगे कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल के. ओके, इसके बेसिस पे हम देख पाएंगे कि हमारा कॉस्ट कहाँ कहाँ पे कम हो रहा है. कि क्या हम फैक्ट्री कॉस्ट ज़्यादा लगा रहे हैं, क्या हम ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ज़्यादा लगा रहे हैं. हम इसके बेसिस पे पता कर पाते हैं कि हमारा पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है. हम पर यूनिट के कॉस्ट पे पता लगा पाते हैं कि हमको एक यूनिट बनाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, क्या हम उस कॉस्ट को कम कर सकते हैं. सो ये एक बेस्ट वे है पता करने का कि एक प्रोडक्ट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या बेस्ट है. सो आई थिंक मैं काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ. और ये चैनल भले ही नया है, मैं लॉजिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जितनी भी चीज़ें हैं. सो मेक श्योर यू गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे. मैं चीज़ों को और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आगे भी वीडियो में आएगी. सो कीप कनेक्टेड विथ मी एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.